Hello and welcome everyone to the today's session that is organized by Medford Network. Medford Network present a live webinar on how to develop business process in a small company, and organized by Medford Network, the Metal Forming Industry Professional Network. This is the network that basically join everyone in a single platform to get each and every kind of helps, or you can say services from inter companies. Like lab testing is there. If there is something you need to understand or know, you are going to share it to other persons. Like technicals, if you have any technical problem, then you can share the doubts or problems with the group, so that it can be you are going to be help out from that kind of problem and sort out all kind of issues that you get on regular basis in your company. So, and not only this, our younger brothers who are from the NIPS or any other college, who are looking for the job opportunities, they are also getting placed from with the help of Medford Network Group. Companies are also helpful by getting hired best professionals from our network. As we are the Niftian, we organize this kind of activity just for the sake of society, to develop their little bit of information, sharing knowledge with others. As today's topic is how to develop business process in a small company. So as I say, a small company, that means for the company whose turnover is less than 5 crore or 10 crore annually, that kind of company are said to be a small company or MSME, or you can say SMEs. These type of company need to be develop their business process to curtail their other expenses which is not need to be occurred. Why business process is required? This kind of thing is going to be discussed in today's session. If you are, as I see here, you are an experienced person who are in the meeting today, so they are already doing this kind of business process in their companies at their time, like lean, green belt, and lots of things is also being discussed with you. Is that are the thing is already being done by you. So that is not new to you. These are the regular practices we did in our companies to develop standard operating procedure. Or other section, what we need to develop business process, why we need to develop business process for a small company, and where it is going to be helpful to us. This type of information you are going to get it from today's session. Before starting my presentation, just I am introducing myself Rahul Kumar, 34th batch ADC, Advanced Diploma Course in Forging. After completing my Advanced Diploma course in Forging, I joined Trinity Engineers Private Limited, Chinchwad, Pune, and later on I reached to Sanghvi Engineering Private Limited, that is in Gujarat, and later on I joined Anup Forging, and thereafter I leave my forging career in the year of 2014 and switched to my own ventures with school, with education field. And we have the right now I am doing businesses with primary school. I have my own family business, that is we have started in the year of 1975 under the guidance of my father. He developed, built a primary school and run almost for the 42 or 45 years. And later on, now I am guiding, I am managing the thing from 2017 onwards. In the Corona time, I also joined to the Vedic math classes and take the become an international Vedic math trainer. And presently, I am guided to the children from Canada, USA, UK,
Sweden. These are the country where where I am taught giving the online lessons to the children. So in addition to that, I am also working with others member, my seniors, or you can say my guide, that is US Harsey. He is also being retired now and enjoying his life at Satara. So which together we are consulting the companies for their to try to solve their problems basically. This is a little bit of information about me. So just introduction about today's session. Before starting the sessions, here is few questions to you. Do you have to invest more time in your business? How much time you invest your time in your business? This is a important question to you, and why this kind of question is being discussed later on. Just let me know how much time, or do you have invested more time in your businesses? Is it just I am putting the question to the audience. How much time you have to invest in your business? You have to invest full time. Full time. Okay. That means 8 to 8. Yeah. Right now, 8 to 6 or 8 to 8. Yeah, exactly. Okay. So this is the problem now, I can say. If you are investing your 8 to 8 time, or 12 hour or 10 hour, you are giving the time to your business, then it's a very difficult one. You are not going to be scalable. This is the demerits. Okay. So how we are going to manage the time and reduce your effort by doing different kind of work in your organization to get more businesses from outside. If you are sitting in your company only, then how you are getting the businesses from outside? So if you are investing much time in your own company, then it is very difficult, and for the future it is dangerous too. Now, my second question is your presence must be perform the daily activities in your business? Is this? Like if you are not available in your company, then your work is not going to be happen. Is this the situation with you? No. No. Then little bit of thing is good. So something is there. You need to leave your company early or reach your company after some time, so that your business going to be performed well. What we need to develop a business, or you can say a different kind of definition for a business from my side is that a business is such kind of term where we need to kept idle ourselves. If we kept ourselves idle, or we are in a different place and still the work is going to be there, then we can say yes, that is my business is working perfectly. And if my business need my own presence on regular basis to monitor everything, then that is not a business. Just I am working over there and nothing else. That is not a business. In a broader prospects, we can say that is not a business. So common problem of startups and business owner is to develop a business process. This is basic problem to every startup. In this new era, almost every year 100 or 500 startups are coming and starting their business in their country, in their state. And they are not even survive after 5 years. They are changed their model of working. They are changing their businesses. Why this kind of situations happen? That we are going to understand today. But the common problem of a startup and a business owner is to develop a business. सभी अच्छा लगेगा तो सब दीजिए. Yes. So common problem of startup and business owner is to develop a business process.
how we are going to develop a business process so that our business can run automatically. If I am not there, it doesn't mean my work is hampered. If I am not available for the 1 week or 2 weeks, and still the working is going on, then we can say, yes, a good thing is there. So dependency need to be avoided. Dependency need to be curtail it down on regular basis. So this type of problem that we are going to discuss today. So here we are going to discuss type of business. The first is personality oriented. That kind of business indicate Lallu Lal Gulab Jamun Wala. A burger merchant, Gupta Burger Wala. These type of businesses are said to be personality oriented. If Lallu Lal is not there in the shop, that means on particular day, the Gulab Jamun is not being prepared. If Lallu Lal is being sick, on that day is also Gulab Jamun is not being prepared and not being served to their customer. So in the same time, Gupta Burger Wala, if Gupta is there, then the taste, then the quality of the burger and everything is to be fine and perfect. And if for the 1 hour or for the half an hour Gupta is not there, the burger quality is going to be deteriorated. So that kind of businesses are termed as personality oriented. The people are all over, all the customer are reaching to their point because of their personality, because of their name. That is Lallu, Lal and Gupta. We have to reach to the Gupta Burger Wala, not other one, because Gupta Burger Wala will give me the best quality of burger. They are serving the best quality. In the same time, Lallu Lal Gulab Jamun Wala is also serving the best quality of the gulab jamun to their customer. According to their name, they are providing. If that person is not available for certain period, the quality is going to be not given at all to the customer. Okay, so if owner did not go to their shop, the quality of their product decline. If that kind of situation is there in your company or in your shop, then it is termed as personality oriented. That is fully depend on you. No other person can help it out to you. That kind of business are termed as personality oriented. The second one is process oriented. Examples of the process oriented companies are McDonald's, Airtel, Jio, Mahindra, Tata. They are the process oriented companies. They build up their own process. How to do the work in the office, or how to build up the mechanism for the HR, for the purchase, for the sales, for the production house, for the machining department. Okay, so all the department, whatever the even the maintenance is there, or little bit of civil construction is there, so they are build up their own process and they are running on that basis. That's the reason Tata can do lots of work outside because of the process. If Ratan Tata is not available in India, it doesn't mean work is stopped. No, work is going to be happen at all. Anyway, the same way Mahindra, for the Jio, for the Airtel and for the McDonald's, all the work is going to be done according to their benchmark and with better quality. No compromise with the quality. So customer are not waiting. Whatever the demand of the customer, they are getting at their time. So customer don't even know the founder also. That kind of company are said to be process oriented. That type of businesses are termed as process oriented. Whatever the business you have. So we are going to understand how to build the process oriented business. If you are doing some businesses, then you have to convert your businesses to process oriented, not the personality oriented.
Now, so you should develop a process-oriented business so that you can relaxing in Dubai or devoting to the God. If you are have the business of process-oriented, then only you are relaxing in Dubai, and still the work is going on. And every day the purchase order is coming on to your company, and every day the sales order is also going to be released. Okay, so then this kind of thing is only happen in a process oriented company, not in a personality oriented company. That is need to be understood by us. Now, so what is operating procedure? Basically we have to discuss what we need. Just we need to develop a standard operating procedure to have process oriented business. If we have to develop our own businesses as a process oriented, then it is our prime duty to develop standard operating procedure. ये हमें करना होगा. प्रोसेस ओरिएंटेड यदि कंपनी हमें चलानी है तो हमें एसओपीज अपनी अपनी कंपनीज के लिए, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए बनानी होगी. So now we are going to understand how to develop the process, how to develop the SOPs for our workshop, for our company, for our businesses. Now, before this, just understand what is the benefit of SOPs. Here is the first benefit, that is business scale up. यदि आपको बिजनेस को बड़ा करना है, छोटे से बिजनेसेस है, 1 करोड़ का ही टर्नओवर कर रहा है साल, और उस बिजनेसेस को हमें बढ़ानी है, तो हमें स्केल अप करने के लिए उसे प्रोसेस ओरिएंटेड करनी होगी. हमें एक एसओपी यदि हमें मिल जाए तो हम अपना बिजनेसेस को स्केल अप कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैकडॉनल्ड्स, दे हैव देयर ओन प्रोसेस एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू स्केल अप देयर बिजनेस. टाटा, Mahindra, every day, or you can say every month, they have their new venture in different cities. They have opening their sales outlet in different area because of their SOPs. If you don't have the SOPs, then you are going to be stagnant. एक ही जगह पर पड़े रहोगे, आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाओगे. That is the main demerits if you don't have the SOPs. Or you can say process oriented business. So this is the main benefit. You are going to scale up your business. SOP का दूसरा फायदा ये है कि efficiency को ये increase करता है. If you have the SOPs of your businesses, then it helps you to increase the efficiency of your human resource, of your productivity also, of your component. And also it gives the quality component to the customer without any compromise with the quality. That if there is a standard operating procedure, it is going to be give every time the same quality. What we give in the last year, in the next coming year, we are going to give the same quality with the whatever the dimensions is there. We are going to keep same certain thing in a specific order if we have the standard operating procedure. So this is the benefits, third benefits of SOP. And the fourth one is uniformity in performance. That means if in the month of March, if our total sale value is 1 crore, then in the next month, we also have the 1 crore sale value. Or if you can say, this much of number of quantity is going to be forced or going to be casted in certain day, then in the next day also we are going to be produce certain component in the same order. That means uniformity is there. If uniformity is there, that means it indicate we don't have that much rejection. Then we can minimize our rejection percentage also. If rejection is not there, certainly we can say we have the good quality product. So it gives uniformity in performance if we have the SOPs. The fifth one is reduce miscommunication. This is the biggest challenge.
This is the biggest challenge what we face in a company, that is miscommunication. Just share your thoughts. If you face this kind of thing, miscommunication in your businesses, miscommunication in your department also, क्या फेस करते हो मिसकम्युनिकेशन को? हर दिन मैक्सिमम कंपनीज फेस करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द कम्युनिकेशन. जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा होती है. मौखिक रूप से जवाब दे दिया जाएगा कि आप कर लो, देयर आफ्टर रिटर्न में यदि नहीं आता है तो उसका बिल भी पास नहीं होता, तो फिर वो दिक्कत शुरू हो जाती है वहीं से. So miscommunication are going to be reduced if we have the SOPs. So now another thing, that is strategy and execution SOPs. एक तो प्रोसेस का SOPs हो गया, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन SOPs. ये क्या चीज है? तो इसमें सबसे बड़ा चीज मैं कहता हूं, फॉर द बिजनेस ओनर, डोंट मेक SOPs फॉर स्ट्रेटजी इन द स्टार्टिंग. Make SOP for execution. Here spelling mistake is there. FOR, not FRO. Do not make SOPs for strategy in the starting. Make SOP for execution only, not for the strategy. Make the standard operating procedure for the execution. Why? We are going to discuss now. Keep the strategy with you as you are the owner of the business. आप अपना स्ट्रेटजी को अपने पास रखिए, उसका प्रोसीजर मत बनाइए. आपको चेंज करना है, वो आपका लुकआउट है, उसका प्रोसेस आप मत बनाओ. छोटी कंपनी है, नो नीड टू मेक द ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द स्ट्रेटजी. वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजी फॉर एग्जीक्यूशन द ऑर्डर. दैट्स इट. स्ट्रेटजी आप अपने पास ही रखो. जब बड़े हो जाएंगे, बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो फिर हम स्ट्रेटजी को भी SOPs में कन्वर्ट कर सकते हैं लेटर ऑन. शुरुआत के समय पर नो नीड टू मेक द स्ट्रेटजी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. जस्ट टू क्रिएट यू नीड टू मेक एग्जीक्यूशन SOPs. मेक द SOPs फॉर द एग्जीक्यूशन सो दैट बिजनेस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग without any hurdle, without any hustle and tussle. The process is going to be keep going on. No stop need to be there. So make the SOPs for the execution, not for the strategy. Strategy आप उसको बना लो, thereafter उसके accordingly SOPs आप execution के लिए create करो, not to make the strategy. Now bring automation in the business. जब आप बिजनेस प्रोसेस की बात आप आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऑटोमेशन की काम होगी, ये स्ट्रेटेजी के साथ आता है. आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी है कि कहां पर हमें ऑटोमेशन करनी है, या हमें जरूरत है भी या नहीं. दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी. इफ इट रिक्वायर्ड बिजनेस ऑटोमेशन इन द बिजनेसेस, फाइंड हाउ. जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस. Identify the business activity as repetitive in nature or done most frequently. अब मैं बिजनेस को ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूं. हम लोगों ने स्ट्रेटेजी SOPs का बेनिफिट्स को हमने समझ लिया है, हमने प्रोसेस बना लिया. अब उस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करें कि वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस पर चलता रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मैं आऊं या ना, प्रोसेस पर काम ऑटोमेटिकली होते रहना चाहिए. So identify the business activity as repetitive in nature or done most frequently. मैं एक एग्जांपल के साथ इस चीज को बताता हूं आपको. बिजनेस एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे एक बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं. कोई भी एक छोटा, जैसे मैं एग्जांपल दिया, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी मैकडॉनल्ड्स, ये डिफरेंट प्लेसेस पर मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी वो दिया है. आप किसी भी आउटलेट्स पर चले जाओ, कोई भी बर्गर यदि आप ऑर्डर करते हैं, उसका टेस्ट, द सेम टेस्ट इज देयर इन द अदर आउटलेट टू. दैट मीन्स दे नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी.
because they are making the standard operating procedure to make the burger of whatever the kind of a burger is. So यदि हम बर्गर बनाने की बात करें तो repetitive work क्या है? How much quantity of oil is there? How much quantity of salt is there? How much quantity of pepper is there? These are the things need to be done. For one burger, this much of amount is required. So we need to put that much of amount only, not more than that. If coriander is not required, so we need to avoid the coriander for particular one type of burger. So coriander, if coriander is required for certain kind of burger, so on that burger SOPs, we need to put the coriander, not in the everywhere. So if the unknown people is there, if there is unknown chef is coming to your businesses, they are also making in one day, whatever the taste is there. आदमी भले चेंज हो जाएगा, पर टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा यदि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन्ड है तो. सेम केस फोर्जिंग के लिए भी होगा. डाई सिंकिंग की यदि मैं बात करूं तो डाई सिंकिंग का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाउ टू मेक द डाई. यदि डाई ब्लॉक है तो डाई ब्लॉक के साथ में हमें डॉवेल काटना है, सैंक कटिंग करना है, सैंक का क्या एंगल होगा, कितना रेडियस होगा, कितना चैम्फर कटेगा, कहां पर डॉक्टेल होगा, डॉक्टेल का पोजीशन क्या होनी चाहिए. ये रिपीटेटिव वर्क है. जितने नए नए डाइज आएंगे उसमें हमें उतना उतना करनी पड़ेगी. सेम केस कास्टिंग के लिए हमें राइजर और गेटर हमें पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें देना ही देना. तो वेयर वी नीड टू पुट, व्हाट इज द हाइट. सो सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज देयर दैट वी नीड टू पुट. सो फाइंड द रिपीटेटिव work in or nature that need to be done frequently. First, that you need to identify what is the work, what is the activity that is repetitive in nature, and then make the framework of execution or SOPs to perform this activity. अब हमारी बात आती है जब हम लोग ने चेक कर लिया एक्टिविटी को जो रिपीटेटिव होने वाली है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना लें या SOPs बना लें उस एक्टिविटी को फाइनल टच देने के करने के लिए. डाई सिंकिंग हो गया, डाई का डायमेंशन हमें चेक करना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट वी नीड टू फॉलो, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर द टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज एंड व्हाट इज द डायमेंशन दैट वी हैव टू चेक फर्स्ट. Okay, so these are the basic thing that we have to keep it in writing so that all the procedure, all the activity need to be discussed and keep it in writing in a paper that we need to follow these thing. यदि ये फॉलो हम नहीं करेंगे तो हमारा डाई आगे नहीं बढ़ेगा. टेस्टिंग के लिए हो, सिंकिंग के लिए हो, या फिर डाई चेकिंग जब हो रहा होगा उस समय की बात हो, डायमेंशंस चेक हो रहे हैं, प्लास्टर कास्ट चेक हो रहे हैं, तो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करनी है. लाइक वर्नियर कैलिपर, विच टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर वी हैव टू यूज. एक बड़ा वाला वर्नियर कैलिपर आएगा, क्या हमें उसे यूज करनी है या छोटा वर्नियर कैलिपर को यूज करनी है, या स्केल को यूज करना है, रूलर को यूज करना है. विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी हैव टू यूज टू मेजर एनीथिंग. So that are the thing need to be in making a standard procedure for that. That make the automate your business. No need to ask every time कि कौन सा वर्नियर यूज करना है, कौन सा कैलिपर यूज करना है. No need to ask. If something is there, a new person can do also without knowing. But if he or she have the certain knowledge, they can follow the path. That's it. And later on, helps in finding high performer, low performer, and no performer in your department or in your company. If you have the framework SOPs, then it is going to help it out to find who is the person who have the high performer, who have the low performer, and have the no performer team.
for the particular person or for the particular of the team. If you have the SOPs, then only you can measure their performance. So these are the basic benefits if you have to automate your business. Later on, knowledge loss risk. What is knowledge loss risk in small businesses particularly? एक छोटी कंपनी के सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक बंदे को आता है डाई चेक करना या डाई सिंकिंग करना या फिर फोर्जिंग हैमर में डाई को सेट करना। अब यदि उस दिन वो बंदा नहीं आया तो आपका डाई सिंकिंग भी नहीं होगा या फिर डाई चेक भी नहीं होगा या प्रोडक्ट को आप लेआउट भी नहीं कर पाएंगे यदि वो बंदा नहीं आया तो नॉलेज लॉस रिस्क यहां पर इस चीज को बात कर रहा है। यदि कल के डेट पर वो बोल दे कि हम अब दूसरे कंपनी जाना चाहते हैं या इस कंपनी में वर्क नहीं करना चाहते हैं, देन इट बिकम अ हैवी लॉस टू द कंपनी। फिर एक नए बंदे को आप ट्रेंड करोगे, ट्रेंड करने में कितने समय लगेगी कोई नहीं जानता। इफ दे हैव द रिटन डॉक्यूमेंट और मैनुअल, दे कैन डू इट इन लेस देन 5 to 10 days, less than 5 to 10 days. And after that, he or she can able to work out in the software directly. So knowledge risk is there. So no SOPs means loss of knowledge risk. If you don't have the SOPs in your company or in your department, that means you are going to be in the risk. कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो ब्रेन जो काम करने वाला बंदा है वो कभी भी जा सकता है। तो वैसा न हो इसके लिए हमें जरूरी है SOPs. Complete business process is in the brain of your expert employee and you are dependent. आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाओगे, वो नहीं आएगा तो काम भी ठप हो जाएगा या फिर वो कहीं चला गया तो फिर से आपको नया बंदा हायर करके उसे सिखाना होगा तब जाकर के आगे काम करेंगे। सो एक्सपर्ट एम्प्लॉय का जो ब्रेन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहीं राइटिंग में जरूर रखिए। वो करता कैसा है, कैसे किया जाता है, उसका एक प्रोसेस यदि हम लोग बना लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड दिस इज द पर्सनालिटी ड्रिवन इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ड्रिवन। If you don't have the standard operating procedure and if you are in the low knowledge, loss risk, then that kind of thing is termed as personality driven, not the process driven. That you need to change to process to personality to process. If that kind of knowledge risk you are facing in your department or in your company, that means you are a personality driven company or businesses. You are not have the process driven oriented or company. That's the reason you are losing your brain of the company or expert employee that are in the risk. If there is a manual of work process, it will bring repeatability in business process. यदि मैनुअल एक किसी चीज का बना दिया जाए, वर्क करने का कल्चर, हाउ टू डू दैट वर्क प्रोसेस यदि बन जाए तो उसे रिपीटेटिव काम में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई नया भी एम्प्लॉय आया, आप उसे 15 दिन के लिए मैनुअल दे दीजिए पढ़ने के लिए, वो चीज को समझेगा, उसका एक टेस्ट ले लीजिए, जस्ट एक छोटा सा टेस्ट कि आप समझे या नहीं समझे, तुरंत आपको पता चल जाएगा वो काम करने के लायक है या नहीं। जिस क्वालिटीज के साथ आप काम पहले देते थे क्या आज दे पाएंगे या नहीं। यदि आपके पास मैनुअल है, वर्क प्रोसेस है, तो उसे फॉलो करके वो कर पाएगा या नहीं, उस चीज को आप तुरंत जज कर सकते हो। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी, देन यू डोंट हैव द नॉलेज लॉस रिस्क। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन की बात रहती जरूर है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन लेटर ऑन बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। नाउ हाउ टू डेवलप द SOPs? How to develop SOPs? First, identify the problem for which you need the process. That is repetitive work where you are facing every day. Dimension हमें लेना है. Make the SOPs. How to make the dimension? Make the templates to curtail the time for have the dimension check. तो ये हमें मदद करेगा। Identify the problem for which you need the process. जहां जहां आपको प्रोसेस
नीड लगता है, महसूस होता है कि यहाँ प्रोसेस एक होनी चाहिए, उस चीज को पहले आप फाइंड आउट करो। एंड देयर आफ्टर, लाइक वेयर यू आर गेटिंग द प्रोसेस, लाइक क्वालिटी क्राइसिस, जहां क्वालिटी से ओरिएंटेड काम है, प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा होता है, प्रोडक्टिविटी में ऊपर नीचे होता है, वहां जरूरत है। आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन की काम है, अकाउंटिंग का काम है। इफ यू आर ऑल्सो वर्किंग इन द एक्सेल, then formula is there, you need to follow the formula. So which kind of formula that we are going to use in certain work, that you need to put it in your manual. So which type of calculation, like costing, किसी भी प्रोडक्ट का रेट हमें निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, इसमें कौन कौन सा चीज हम लोग ऐड करेंगे, एट व्हाट रेट, मटेरियल, प्रोसेस, scrap utilization, cutting, tooling, all sorts of things need to be added. यदि आप किसी जॉब का वैल्यूएशन कर रहे हैं और उस जगह कोई भी एक पॉइंट छूट जाता है, सपोज मटेरियल टेस्टिंग का प्राइस उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं और पता चलता है कि इसमें तो हमें मटेरियल टेस्ट 110% करना है, उसके बिना मटेरियल नहीं लिया जाएगा, तो आप लॉस पे रहते हैं। So what are the things that need to be done? You need to just write it down. Put it somewhere in your SOPs so that nothing is to be nothing, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। यदि आपकी SOPs बन जाती है तो किसी भी प्रकार के चीजों को छोड़ने की बात ही नहीं होती। आप नया हो या पुराना हो, आपका काम पहले जैसा चलता था वैसा ही आज भी चलता रहेगा। आवरली बेसिस का रेट आप कैलकुलेट करते हैं मशीन्स के लिए, एवरी मशीन यू हैव द आवरली रेट, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू कोट योर जॉब। सो कैलकुलेशंस की बात हो, क्वालिटी क्राइसिस की जहां तक बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, कितने ब्लो पर हमें इस पर्टिकुलर जॉब को बनानी है, वो हैमर का ब्लो भी आएगा तो कितने लेवल पर आएगा, कितना इंटेंसिटी उस ब्लो का होगा, या प्रेस में कर रहे हैं तो कितने बार में जॉब रेडी हो जानी चाहिए, पहले फ्रंट होगा या बैक होगा, ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ जानी चाहिए। ट्रिमिंग कैसे होगा, बैक साइड ऊपर रहेगा या लोअर, स्टाम्पिंग वाला पोर्शन नीचे रहेगा या स्टाम्पिंग वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, दिस आर द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर in the standard operating procedure so that your productivity can't hamper and your outcome will become good. कल जो आया था आउटकम, आज भी हमारा वही आउटकम आएगा। जो टाटा करते हैं, महिंद्रा करती हैं, बर्गर मैकडोनल्ड्स भी करता है, सारे कंपनीज, एयरटेल, जियो, ये सारे के सारे लोग करते हैं। इसमें हम लोग करने के लिए एसओपीज में ही हम लोग प्रॉपरली चले कह के हम लोग काइजेन भी अप्लाई करते हैं, 5S अप्लाई करते हैं, ब्लैक बेल्ट की जो कई सारे केसेस हैं वो सब हम लोग अप्लाई करते हैं, जस्ट टू डेवलप द एसओपीज टू गेट द प्रॉपर आउटकम ऑन डेली बेसिस। यदि एक बंदा एब्सेंट भी हो उस दिन भी हमें प्रोडक्टिविटी उतनी चाहिए, इसके वजह से। नाउ अगला हमें क्या करना है, राइट द गोल एज पर द करेंट प्रॉब्लम। प्रोडक्टिविटी में हमारा कम आ रहा है, उसका गोल बनाइए, 5% नीड टू बी राइज इन द नेक्स्ट क्वार्टर। रिजेक्शन हमें कंट्रोल करना है, उसका एक गोल सेट करिए, कितना होनी चाहिए। फर्नेस ऑयल कंजम्पशन एक गोल बनाइए, कितनी होनी चाहिए। अब फर्नेस का मेंटेनेंस कितने दिनों में होनी चाहिए, उसका भी एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, तब तो फर्नेस ऑयल का कंजम्पशन हमारा मेंटेन रहेगा। बर्नर चेंज कब हुआ है, बर्नर क्लीनिंग कब हुआ है, हैमर का क्लीनिंग कब हुआ है, फर्नेसेस की क्लीनिंग कब हुआ है। These are the things that you need to write, and accordingly you need to set your goal. Later on, build the process boundary. Process boundary indicate what? From start point to end point. That is process boundary. इस पर्टिकुलर जोन से हम शुरू करेंगे काम, यहां तक खत्म करेंगे। यदि यहां इन दोनों के बीच से कोई भी चीज लूप होल कोई छूटता है तो उसे हमें कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई एक चीज भी छूटता है दैट मींस वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट वी नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रोसेस दैट इज रिटन इन द मैनुअल।
Don't escape anything. If you escape something, definitely that means you are compromised with your quality to the product. Now, the third one is brainstorming. Brainstorming around all the activities with your team. अब हमारा आइडेंटिफाई कर लिए किस चीज का हमें प्रोसेस बनानी है. सेकेंडली, हमने प्रोसेस बाउंड्री डेवलप कर लिया, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड देयर आफ्टर वी नीड टू नाउ ब्रेनस्टॉर्म अराउंड ऑल द एक्टिविटीज विद योर टीम. अब हमें एक्टिविटी को लिखनी है, राइट डाउन, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड सीक्वेंस. कौन सा काम को पहले करनी है, पहले फोर्जिंग होगा या पहले कटिंग होगा, या पहले इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल होगा उसके बाद कटिंग होगा, या मटेरियल आया कटिंग करो डायरेक्ट फोर्जिंग के लिए डाल दो, या पहले उसमें हीट ट्रीटमेंट हमें करना है या सॉफ्ट ब्लास्टिंग करनी है. You need to write the activity according to your need. Write down all the activity required to complete the processing sequence, and thereafter manpower requirement required for performing different activities. कौन बंदा किस जगह खड़ा रहेगा, किसके जिम में क्या आएगा. लैब टेस्ट यदि करना है हमें मटेरियल का, तो उसमें कटिंग का क्या रोल है, उसको लैब पीपल आनी चाहिए कटिंग शॉप पर, वो मटेरियल लेकर के जाए टेस्ट पे, चेक हो, क्वालिटी चेक ओके है कि नहीं मटेरियल्स का. तो ये मैन पावर का डिफाइन करिए कि कौन बंदे का क्या रोल है. ये आने वाले पॉइंट पर हम बताएंगे. पुट प्रोसेस इन फ्लो चार्ट फॉर इंटीग्रेटेड रिव्यू. पुट इट इन द फ्लो चार्ट. Everything need to be keep it in paper, and later on we have to keep it a process flow chart for the integrated review. And now what is integrated review? See, that means process role. Integrated reviews, that means process role, task of every employee. What is the role? What is your role in the process? That you have to define it. Who is the person has to be responsible for certain kind of work that you need to define. Flow chart, sequence of tasks that will be performed, and later on integrated review, how much work will be provided to whom, किसे कितना काम करनी है, ये भी डिफाइन जरूर कर दिया जाए उस फ्लो चार्ट में, प्रोसेस फ्लो चार्ट में, ताकि ये ना हो कि ये काम मेरे हाथ में ही है, सब कुछ मुझे ही करना होता है. सभी का एक सर्टेन लेवल लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशंस को देखते हुए उसका जॉब रोल जरूर डिफाइन होना चाहिए. छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज में तो KRA KPA वगैरह सब बनता है, लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए डिफिकल्ट टास्क होते हैं. बट इन छोटी छोटी चीज को यदि डिफाइन कर दिया जाए तो ये जो रेगुलर का जो हसल एंड टसल होती है कि ये नहीं आया सर फिर भी मुझे भी करना पड़ रहा, मैं ही हूं जो सब जगह हर डिपार्टमेंट में बैठता हूं, ये नहीं आया तो मेरी जवाबदारी, ये नहीं आया तो मेरी जवाबदारी, क्या मैं ही एक बंदा हूं जो करने वाला हूं? सो वी नीड टू कर्टल दैट काइंड ऑफ वर्क. किसका क्या रोल है जरूर वो डिफाइन कर लीजिए, और कौन कितना काम करेगा, कहां तक उसकी भूमिका होगी, वो जरूर डेफिनेशन में आनी चाहिए. नाउ किल द पोटेंशियल प्रॉब्लम इन एडवांस विद RACI मैट्रिक्स. अब अभी तक मुझे इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात मैंने किया, उसी चीज को एक एडवांस लेवल पर हम जा रहे हैं RACI मैट्रिक्स बनाने के लिए. नाउ व्हाट इज RACI मैट्रिक्स? इससे क्या हो, पोटेंशियल प्रॉब्लम हट जाएगा, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो निकल जाता है. रेस्पॉन्सिबल डिसाइड करिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एक्टिविटी इन द बिजनेस. यदि फोर्जिंग का बिजनेस को देखना है तो पर्टिकुलर कौन पर्सन इन्वॉल्व होगा उसका नाम डिफाइन करिए. किसके जिम में हीट ट्रीटमेंट का शॉप होगा, किसके जिम में फोर्जिंग की होगी, किसके जिम में कटिंग होगा, कौन कट बिलेट्स को कटिंग शॉप से फोर्जिंग शॉप पहुंचाएगा, फोर्जिंग शॉप में जो प्रोडक्शन हो चुका है वो कहां जाएगा, वो किसका जवाबदारी है, वो जवाबदारी जरूर तय होनी चाहिए, और कहां तक लेकर के जाएगा उसकी जवाबदारी जरूर होनी चाहिए. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी डिफाइंड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. R, for every person you need to define that responsibility, ताकि किसी प्रकार का हसल टसल ना हो कि ये मेरा जोन पर आकर के काम कर रहा है. ये कई छोटी इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा, कि मेरे को ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है. आई एम द पर्सन हु इज
whose shoulder have the lots of work, और कोई दूसरा तो बैठा रहता है टेबल पर, चेयर पर, फिर भी वो कुछ नहीं करता है, उसे कोई कुछ नहीं कहते हैं. So that kind of thing need to be kill that problem with responsible, make the people responsible, give them activity oriented work that you have to give this much. आपकी ये रोल है, define it, and later on accountable, decide who will be accountable for a particular activity. Accountable is there. Responsibility तो एक बात हो गई कि आपकी responsibility है, but accountable भी होनी उतनी ही important है. In term of quantity and in term of quality, you must be the accountable person. So make some person accountable also. And the third one is consulted, जो responsible person और accountable person को handle करे. That is consulted. Decide who can help the responsible and accountable people. उसे भी तो हेल्प की जरूरत है. यदि कहीं कुछ लूप होल्स निकल गए हैं तो वो किससे जाके डिस्कस करे. यदि वो भी अकाउंटेबल पर्सन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी किसी जगह फंस जाता है तो वो किसे रिपोर्ट करे या किसके साथ बैठ करके डिस्कस करे. वो एक कंसल्टेंट जो हेल्प करने वाला होगा वो भी डिफाइन करे कि कौन होगा वो. एंड लेटर ऑन इन्फॉर्म, डिसाइड हु विल बी इन्फॉर्म्ड पर्सन. ही इज द हेड ऑफ द कंप्लीट ब्रांच. कोई भी चीज, नई चीज आ रही है तो उसका इंफॉर्मेशन किसके जरिए आएगा. रेस्पॉन्सिबल पर्सन के पास, अकाउंटेबल पर्सन के पास, कंसल्टेंट पर्सन के पास. कोई भी इंफॉर्मेशन आनी है वो कहां से आएगा. सुनी सुनाई बातें को हमें फॉलो नहीं करना. किससे हमें इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक पर्सन कौन है जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए मददगार होगा या रेस्पॉन्सिबल होगा. दैट यू नीड टू डिफाइन. यदि परचेज ऑर्डर की बात है तो मार्केटिंग वाला करेगा. हम उसे सेल्स वाले पर्सन से यदि बोले कि ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को हमें इस पर्टिकुलर डेट को डिफाइन करना है, डिलीवर करना है, दैट इज द रॉन्ग वन. यदि हमें कटिंग वाला हमें बताए कि ये परचेज ऑर्डर आया है, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन. कटिंग के पास कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा. ये इंफॉर्मेशन हमें मार्केटिंग टीम के तरफ से आनी चाहिए कि इस चीज का ये परचेज ऑर्डर इस पर्टिकुलर डेट को डिलीवर करना है, ये आइटम है. इसके इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन को मेंटेन मार्केटिंग से आएगा, न कि सेल्स से, न कि अकाउंट डिपार्टमेंट से. सो इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिफाइंड. छोटी कंपनी है तो आपको जरूर इस चीज को ध्यान रखना कि कौन होगा जो डाउन द लेवल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. क्लाइंट का कोई कंप्लेन आया तो उसे कौन हैंडल करेगा. उसको इंफॉर्मेशन नीचे डाउन द लेवल कैसे जाएगा वो जरूरी है. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो प्रोडक्शन वाले को ही बताएगा या मार्केटिंग वाले को ही बताएगा. मार्केटिंग वाले को यदि बता दिया तो टर्म के बीच में वो फंस करके रह जाएगा. क्या दिक्कत आ रही है मुझे नहीं मालूम. तो कंसर्न पर्सन जरूर होनी चाहिए जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑन द वे एज इट इज ट्रांसफर कर सके, इन्फॉर्म कर सके. सो डेट नीड टू बी डिफाइंड RACI टू किल द पोटेंशियल प्रॉब्लम. यदि ये हम लोग कर लेते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक अकाउंटेबल पर्सन एंड कंसल्टेंट एंड इन्फॉर्मर, दैट मीन्स कंपनी हमारी अच्छी हालत पर चलेगी, किसी प्रकार का पोटेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा. वो एडवांस में ही किल कर दिया जाए. नाउ एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आई डू, वी डू, यू डू मॉडल. इस पर यदि हम लोग फॉलो करें तो लगभग मैं कहूंगा ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल कंपनी नीड टू बी सॉल्व इट आउट. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम उसे करके दिखाएंगे. फर्स्ट लेट आई डू, मुझे करना है, मैं करके अपने जूनियर्स को बताऊंगा कि ऐसा हमें करना है. एम्प्लॉय के सामने आप पहले उसे करके दिखा दो, वो सीख गया, देख करके सीख गया. लेट्स वी डू, अब दोनों मिल करके करेंगे. यदि कहीं उसे दिक्कत हो रही है तो उसको हम लोग मदद भी कर सकते हैं. सो वी डू, लेट्स वी डू, जॉइन टुगेदर. अब हम दोनों मिल करके करेंगे. एक बार हमें करके दिखा दिया, आप देख लो, फिर आप भी एक बार फिर से आ जाओ, हम दोनों मिल करके करेंगे आप, मैं देखूंगा. एंड लेटर ऑन जब वो सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो यू नीड टू डू. इस तरह से यदि हमें अपना प्रोसेस को बना लेते हैं
then you supervise of the work of your junior. You do. तो सुपरवाइज वो कर लेगा अपना जूनियर्स को, फिर वो अपना काम को धीरे धीरे नीचे का कराता रहेगा. So that is the model we need to develop in our small company. That is I do. This is the first way. Secondly, we do. आप आओ मेरे ऑफिस पर, एक बार मेरे साथ देख लो काम करके कैसे करते हैं. आप मुझे करके एक बार दिखा दो हाउ टू डू. जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो आप अब डाउन द लाइन जाओ और दूसरे को भी बताओ. अब वो आपका एक मास्टर पॉइंट हो जाता है, मास्टर पर्सन बन जाता है, जो नई चीज को बताने के लिए वो एलिजिबल होता है. आप रहो या ना रहो, आपका सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस क्रिएट करना हो, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाना हो, या टीसी बनाना हो, या किसी प्रकार का कोई डायमेंशंस एरर को फाइंड आउट करना हो, तो ये आई डू, वी डू, यू डू के मेथड्स यदि आप फॉलो करते हैं तो 110% मैं कहता हूं पोटेंशियल प्रॉब्लम जो अपकमिंग आने वाले हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक की बात मैं कर रहा हूं, आ सकते थे, उसको आप पहले ही हटा चुके हैं. टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम, इंप्लीमेंट RACI मैट्रिक्स एंड आई डू, वी डू, यू डू मॉडल इन योर बिजनेसेस. So these are the things that need to be understand and need to be followed by you. If it is your small company or a departmental where you are working, यदि आप इस चीज को करते हो, आपका टीम परफॉर्म बेहतर करेगा, अच्छे तरीके से करेगा, आपके एब्सेंस में भी काम उसी तरीके से होगा जिस तरह से आपके प्रेजेंस में होता है. So this much for today from my side. Now open for the discussion. Now we have the 12 participants with us. Correct. ಈ ಸೀದಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವ ತಿರ್ಪಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತೇನ? Yes, now open for the discussion. If you have any queries, any doubt, any sharings from your side, then you are most welcome. Excellent, Mr. Raghul Kumar. You have done very, it's a simple thing, but you have explained beautifully which are the things normally affect any small company or big company also. It is not only for small companies. Otherwise, most of the people do firefighting and lot of miscommunications. What you told, beautifully explained. Good, thank you. Unfortunately, there are the audience are very less. That's what I was telling many meetings to Medfar forum. See, how do I connect? When I was in Saudi Arabia, I came to the Nifty, that is in Ranchi. Okay. So that's how I am connected with this. Actually, see, you are doing great job, Medfar, but people are not taking advantage of that. That's what. Yes. Yeah, it is paining. You are giving beautiful advice. Many people have overtaken so far. So they have done beautiful job. You have done wonderful job, Mr. Raghul. Okay, thank you. All the best. Yeah, thank you, Natarajan Velu. Any other sharings? Here almost 10 people are there. 11 people are there. Yes, Tribhuvan Prasad sir, please. How do you find today's session? Is it helpful to you? And how you are going to implement this information in your life? Hello, sir. I'm Nadraj. Yes, Good evening, sir. Good evening, yeah, good everyone. Good evening. This nice class actually. What the company procedure like starting to end like as you have mentioned, like flow chart, everything you have mentioned. So it's nice, but at presently I'm not working actually.
And Okay. actually almost retired. Retired means I voluntarily retired. Actually, I'm a tool room personal, like Okay. tool engineer and mold design Uh-huh. also. So Uh-huh. I was in overseas. I think 10 years before itself, I come and I'm looking into the agricultural area. Okay. So now I'm looking for something to start up. And that is a thing I wanted to attend. But this is a very nicely or interpreted. I mean, everything you explained nicely. But this is as a small company is there, and then as well as a big company also. Hmm. So it's because in my line like tool engineer is a tedious job, like precision engineering is it's a lot of things I have to put. It's not easy things actually. I feel like Yes, many. yes, yes. Agree. But compared to other field, is the tool engineering is a very much hectic job. Is a too much 10 micron, 20 micron we will be Yes, talking. yes. I was in Pune, I was in Bombay, I was in Jalgaon. Actually, basically, I'm from Tamil Nadu, Tiruchirappalli. At presently, I'm supporting my son. He's doing a college actually. But just supporting only purely. I'm not working at presently. Okay. I like to do future. I mean, another 2 years, I want to hang over here Yeah, in okay, Bangalore. okay. Actually, I'm in Bangalore. Bangalore. I intend to do see a lot of things, but it's not materializing. Even though, like nowadays in India, people are talking more, but is not the people are not united or many things happening. Like technically, some people are maybe sound, but individually they cannot do it. See, everything's like in a small company also, as you said, like SOP, all those things. You cannot teach everything to the people. See, if people are, you have to control the business, control running the show, everything, is required. A small business is, nowadays is, I feel like, overall, from outside I'm seeing, but it is difficult to run. So big Hmm. company will swallow, or maybe the big company they have development more and more compared to small. Yes, Why yes. means they can they scale up, they can reduce the salary, they can manipulate everything. But small company cannot get the loan, cannot get manage the things, all those things happening. So I feel like these things actually instead of I mean one idea is that even people are honest, but it's very difficult to unite. But the group people like-minded is there means is very good. Like self-help group, like kind of people, any business. Hmm. If people are coming to the group, then it is very good. That way we have to farm in the future also. I feel like strongly in future, if this kind of things is coming out, then it's good. Because individually is a bit I feel difficult. Hmm. This is my personal opinion, maybe good or not, but just personal opinion. That's all my feedbacks are. Okay. Thank you, Nataraj sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other sharings, feedback, please? Yes, Binay sir. Hello. Amitesh Rajji. Hello. Yes. How do you find today's session, sir? Good news, sir. Good evening. Sir, actually, today's session was most informative. Actually, for a small business, we have SOPs. So, if we initiate anything, then we have to make SOP and develop so many points to how to product development. And actually, I am working in the forging line, sir. Okay. Where you are right now? Sir, in Kishan Datek, Ghaziabad, sir. Ghaziabad. Okay. Hmm. So we all, I hope you have the business operating procedure at all in your Yes, sir. and inter-department also, right Yes, now? sir. Yes, sir. Okay. So I hope you learned something from Yes, this sir. session and you are going to implement in your Yes. work process. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Welcome, sir. Shivam Lodha. Shivam sir, please. N. Suresh. Yeah. Thank you, Binay ji.
I gained and learned as a fresher a lot. Good. Sir, I have some problem. That's why I am feeling some. Okay. From where you are, sir, Binayji? Sir, I am pursuing my ADC from NIF. In which batch? Sir, I am from 48 batch, sir. 48 batch. That is the current batch, I hope. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. So what about others people, others students? Why they are not joining the session? Sir, some of them are busy in their project and some other work. So I think they can't. Okay. One of my buddy joined. His name is Kiran Datta, and I got the link from them. Okay. Ask them to join such kind of sessions which are going to be free for them. I and did they are it, sir, going to but I join- think it is very beneficial for us. And I think it is very useful for us as a fresher. Okay. So, sir, thank you so much for sharing your views on this. Thank you, sir. Okay. Yeah. Welcome. Any other feedback from anyone? Anil Kumar Nandi, sir, please. Yes, the founder member of the Medford network is also joining us. He is in the line, but he is busy with somewhere. That is Mr. Amit Sainik. He is a person who can do lots of tremendous work to contribute his time to develop such kind of Medford network for the society, for the companies. So it's a really good thing. Yes, Mr. Amit Sainik. Am I audible, Rahul? Yes, you are audible now. Okay, thank you, Rahul, for this such a wonderful presentation. Actually, मैं थोड़ा सा और भी job कर रहा था, इसलिए continue तो नहीं था, but सुन रहा था मैं. Okay. And as usual, you are a very good speaker, and the presentation also I shared in the YouTube, LinkedIn, and also in Twitter. So we can get the link so that all the presentation will be get from there also. Meanwhile, I thank you all the participants who joined this meeting. और ऐसा हम हर संडे को वीकली मीटिंग होती है. अभी जो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 14 लोग दिख रहे हैं. Yeah. इसमें से काफी सीनियर त्रिभुवन सर हैं. मैं चाहूंगा राहुल गेट द फीडबैक स्पेशली फ्रॉम द सीनियर पीपल लाइक त्रिभुवन सर. Shivam is an entrepreneur I know from Clubhouse. Okay. Velu sir. So you can get feedback online. So and I'm here. So participant, please give feedback one by one. Yeah, waiting for the feedback from Tribhuvan Prasad sir, please. If he is not there, then welcome to Shivam Lodha, please. As I heard, as you are an entrepreneur now, so it is better to hear from you which kind of problem you are facing right now and what are the situations in this current scenario. Anybody can unmute your mic and raise the hand and share the feedback, suggestion for our initiative. Kiran Dattaji. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, I am also from ADC 48 ADC, sir. Okay, you are also from 48 ADC. Yes, sir. Nice, all right. And मैं जो है काम परसों अटेंड करके आया. Okay. And Yes, थोड़ा मुश्किल है. sir, it's a nice presentation provided by you, sir. I am very thankful to Amit sir and you. He sent me the link and told me to join the meeting. Actually, before we have
continuing the meeting on regular basis on Sunday to Sunday, but in now current condition we are busy in our project work and seminar work. That's why we are little bit busy in our schedule. Okay, what is the topic of your seminar, Kiran Datta? Sir, heat treatment, sir. Heat treatment of EN9 steel, sir. EN9. Are you Yes, able sir. to present in the next week? Not in next week, sir, because Then? it's not completed, sir. Okay. Okay. And what But about sure, Vinay? but sure, I will share Yes, you sir. I can share my Okay. project and seminar Okay. Okay. in next meeting, sir. Okay. It is better to hear you, the people, the newcomers from the NIFT. What is Yes, your sir. views? It is better to hear from you also. Okay. sir. And if there is any loopholes or some problems is there in your seminar, that is going to be corrected from the mentors also. So prepare your slides, screens, and everything. Keep it in touch with the team and plan for the sharing your views, sharing your seminars in this forum also, so that everyone can understand you. That is, you want to, it also help you to develop your professional personality. Okay, everyone can understand who is the person. Might be possible यदि आप इस चीज को आप करोगे ऑनलाइन में लेकर के, तो शायद यहीं से आपको कहीं से क्लिक कर जाए, कोई एम्प्लॉयर होंगे जो आपके पर्सनालिटी को देख करके आपको ज्वाइन के लिए कह सकते हैं. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. participate in this type of forum. Sure, sir. Thank you, sir. And ask to other persons also from the Foundry and Forge group. They need to be participated in this Metfor network. Not only in the WhatsApp, they need to be participated in online meetings also, to develop their communication skills, to develop their personality, and all sorts of things need to be done. Okay. Right. Rahul, do Okay, one sir. thing. Just call the name as you see in a participant list, or get the feedback and share the input from the participant. Okay. Bablu Tuduji. Bablu Tuduji. He is connecting to the audio. N Syam. N Syam. GS Reddy. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening, please. I'm JS Reddy from 43rd batch, sir. NIFT. Which batch? 43rd. Yes, sir. Okay. I am from 34th batch and you are from 43rd. Okay, all right. Yes, sir. Now, where you are working? I'm working with SD Forging, sir. SD Forging. Where it is? It is Hyderabad, sir. Hyderabad. Our senior also 27 batch or 26 batch. Ajit Kumar sir is also working here, sir, as a director. And Amit Sainik is also from the 27th batch. Yes, sir. Amit Sainik sir only recommended to me here. Okay. So that kind of thing is going to be happen. Yes, sir. If you join with the seniors with this kind of online meetings, you are going to be you are getting to be benefited. Yes, sir. For developing aluminum alloy here for defense company. Okay. I have experience previously with the aluminum forging. Okay. So, non-ferrous. So you have the experience of non-ferrous forging. Yes, sir. I have non-ferrous, ferrous also I have, sir. Siva Mototech also work. Okay. Siva Mototech. Okay. Yes, sir. I came here only 6 months joined here. I'm working regarding about the aluminum alloys. Okay. Bharat Dynamics Limited. We are implementing the production. Okay. Yes. Now I once again call to Shivam Lodha sir, as he is not available in the mic on that time. So welcome Shivam sir. Please give your input. Am I audible? Yes, sir. Yeah. The session was wonderful, sir. Thank you for giving the time. Because my father obviously used to say that if someone is giving you a time, that means he is giving you a life. Yes. Sir,
basically what I feel in my business right now is that I'm getting a lot of leads, and my team is also like systematic and they are doing well. But the situation, what I feel is that I mean, um, means the services which I offer, like but I do not have a previous a client or someone like that. So whenever I pitch new clients, they always ask me that tell me something about your previous work or your previous uh, client. So so what can I do in that situation? Okay, okay. How many year you are working right now? From means I've started this business 1.5 years ago. Means in Okay, just 1.5 year January. ago. Yeah. Okay, okay. Then it is better to discuss what are the positive factor in your with you. What are the main part? Whatever the company it is. It is a digital marketing agency. Okay, you are working with you have the digital marketing work right now. Yes, sir. Okay, and where it is? Udaipur, Rajasthan. Raipur. No. Jaipur. Udaipur. Udaipur, Rajasthan. Okay. Yes, sir. Okay. So they are yes, it is a very difficult situations is there. So how to give the name of the client and how to discuss the what are the thing that is going to be happen with that client. Yes, it's a difficult one. Yes, sir. Yeah, you need to from my opinion आपको ये करनी चाहिए कि वो जो क्लाइंट है उनसे आप इंडोर्स लीजिए कि मैंने आपको सर्विस दिया था उसका आउटपुट आपको कैसा लगा। एक फीडबैक कॉल यदि हो जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके। क्लाइंट का फीडबैक यदि हमारे साथ मिल जाए, जो भी क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, 4 क्लाइंट है, यदि उस क्लाइंट का हमारे पास रिव्यू आ जाते हैं, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में है तो उसको बेहतर होगा कि डिजिटली ही उसका रिव्यू को लिया जाए। यस सर। तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। I used to do that, sir. Like on my Google My Business, I used to tell them to give their feedback, and many people give also. To that time doing, but then also it is sometimes difficult, and sometimes they say that your services are like are costly or like that. Okay. So at that point I used to tell them that that sir, I am not a Maruti, I am a BMW. I'm giving you a world-class services, and for that I'm charging you like this. So sir, I used to give them this. So is it right or wrong? Absolutely correct. Absolutely correct. मैं आपको बता दूं, जहां नेगोशिएशन की बात आती है, प्राइसिंग की जब स्ट्रक्चर की बात आती है, तो नेगोशिएशन की एक स्किल ही है। तो एक लाइन में आपको बताऊंगा, वो आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। Okay. आप क्लाइंट के साथ ये बात बताओ कि हर पीली चीज सोना नहीं होता है। Exactly. राइट ना? तो आप सोना परचेज करने आए हो तो आपको कॉस्ट सोना का ही देना। ओके। तो ये एक वे होगा टॉक का, आप क्लाइंट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं ये चीज रेफर कर रहा हूं जो आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हाँ। ये चीज जो मैं क्वालिटी के साथ, प्रिसीजन के साथ आपको काम दूंगा, ये कोई दूसरा यदि देता है इस रेट पर तो देख लीजिए, अदरवाइज इस रेट पर आपको देने वाला कोई नहीं। जी सर। वो भी देगा तो यही बात दिमाग में रख लीजिएगा कि हर पीली चीज सोना नहीं होता है। राइट ना? तो ये एक नेगोशिएशन की एक स्किल है, आर्ट ही है, मैं कहूंगा उसे। ओके। तो नेगोशिएशन स्किल यदि आप डेवलप कर लो अच्छे तरीके से तो रियली हेल्पफुल हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करनी पड़ती है सेल्स के दरमियान। क्लाइंट के साथ डिस्कस जब होती है तो आप उसे कुछ ऑफर्स भी ऑफर देना पड़ता है कभी कभी, बट ऑफर्स फ्रूटफुल नहीं होते। कितने दिन तक आप ऑफर पर चलो? सही है।
तो ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए आप कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम बीइंग के लिए हो सकते हैं, दैट इज गुड, नो इशू, बट नॉट फॉर द लॉन्ग जर्नी। एग्जैक्टली। ओके, क्वालिटी आप दीजिए, क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। ओके ओके। आज हमारे सिटी में जियो आया था, सभी टक्कर ले रहे थे, आज की डेट पर देखिए एयरटेल सर्वाइव कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है। एग्जैक्टली। आप उसका एडवर्टीजमेंट पर गौर करिएगा, फोकस करिएगा, तो आप बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। जियो बोलता था दुनिया मेरी मुट्ठी में, और फ्री देता चला गया। 1.5 साल, 1.25 साल तक, 1 साल के करीब करीब तो फ्री ही दिया। और एयरटेल, उसका आप एडवर्टीजमेंट याद करिएगा, मेरा नेटवर्क सभी जगह है, हर गांव में है, हर रोड में, तो वो सर्विसेज देने पर फोकस किया। तो इसके वजह से आज एयरटेल सरवाइव कर रहा है, दूसरे कंपनी फेल हो चुके हैं। तो सर्विसेज आपकी बेहतर हो, टाइम बीइंग, दैट मींस यदि आप कह रहे हैं सर्टेन डेट पर डेडलाइन आपने दिया है, तो उस डेडलाइन पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर्विस आप दो, आपको 110% मैं कहता हूं क्लाइंट आएंगे आपके पास, बस सर्विस पर आप फोकस करो, है ना। दैट इज फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। ओके ओके। So any other one would like to share your views, your opinion? If you have, then share it. Otherwise, we are going to close this today's session. Right now, we have the 9 participants total. Yes, Kapoor ji, would you like to say something? Okay, I call one by one. Anyone like to speak? Just speak there 1 or 2 minutes, some word. Amitesh? Amitesh? Okay, Kapoor Ismail? Okay, Binay? Am I audible now, Rahul? Yes, yes, yes. Okay, and Mr. G.S. Reddy? Okay, Yes, sir. Good evening. Good evening. Yeah, Reddy, sir. Yes, sir. I already speak, but today I did not attend the class. Next time onwards, I will attend, sir, compulsory. ओके ओके। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा राहुल, आप भी ना नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगा ना, तो जो नए लोग अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो वी आर इनवाइटिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। राहुल मेरी, हाँ, तो जो जैसे कि अभी कोई बता रहा था मैं एल्युमिनियम फोर्जिंग में काम करता हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो इफ ही इज एबल टू डू एनी प्रेजेंटेशन इन एल्युमिनियम फोर्जिंग, तो वो हम वी आर वेलकमिंग, क्योंकि हम रेगुलर स्पीकर्स भी चाहते हैं जी। इट्स जस्ट एक इंटरेक्शन सेशन है जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग करते हैं विद चिट चैट एंड द प्रेजेंटेशन वे। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड द लास्ट कॉलिंग नटराज। Nataraj, can you share some? Yes, he is already shared this talk. Okay, already shared. So we get all, I think, feedback from everyone. Yes, yes, who like. So I personally, I'll like to thank you, Mr. Rahul. You are very good, nice human being, always supporting our forum. And I thank you all the participant. Please, हम थोड़ा चाह रहे हैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़े, हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, तो प्लीज सपोर्ट अस कि आप जो भी जुड़ते हैं 2 से 4 लोगों को साथ में और लेके आए, तो उससे काफ़ी लोग जुड़ेंगे इसमें। ऑलरेडी वी हैव क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस स्पेशली फॉर द नेटवर्किंग, उसमें 200 लोग हैं मेंबर। तो मैं आज उसको फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स जो एक्टिव मेंबर रहेंगे वही लोग उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। सो हम एक्टिव मेंबर चाह रहे हैं, हमको क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट जितने क्राउड हैं सब एक्टिव रहें, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। और एक दो और चीज़ हमारे बैक चैनल में हम वी आर डिस्कशिंग की, जो कंपनी है उनको प्रमोशन के लिए कैसे लेके आया जा सकता है इसमें, तो और साथ में हायरिंग का भी है, जो निफ्ट का प्लेसमेंट हो गया या किसी का भी जो ऑलरेडी बैक चैनल में हम लोग करते रहते हैं। तो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग एंड सब कुछ प्रो बना बेसिस पे है, वॉलंटरी बेसिस पे, कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम एवरी प्रोफेशनल हु सपोर्टिंग आवर कॉज। तो वंस अगेन थैंक यू राहुल। Rahul, you want to say something? Thanks note. Yeah. Thank you everyone for joining this Medport Network presentation, and I hope you are going to join these sessions and getting fruitful information from this forum.
Thank you very much. Okay, thank you. So now I am closing this meeting. 5, 4, 3, 2, 1. Ending.